is basically called a matter. And when we say matter, matter has two fundamental properties. One is that it occupies space. Okay? It could be very insignificant space, but it will definitely occupy space and it will have some mass. In addition to the mass, it will also have, it can have जो basic constituent है किसी भी matter का वो क्या है? Atoms is composed of sub-elemental particles, proton, neutron, and electron. Okay, so excess or deficiency of these electrons is the cause of charge on a body. Okay, so if you take out some electrons, that body becomes positively charged. If you give some electrons to it, it becomes negatively charged. Now, in addition to matter, the matter has properties like mass and it occupies space. Now, it can have charge, which charge is another fundamental property. Now, associated with the charge, there are three fundamental properties. One is that it can have its electric field, which could be conservative and non-conservative. Then if the charge is in motion, it can have magnetic field and electromagnetic waves. So under what conditions moving charge produces magnetic field, and what is the behavior of magnetic field, how it exerts force on other current carrying elements or moving charge, all that comes under the purview of this chapter, magnetic effects of current. Okay, so the entire 12th standard physics, if you see, it is divided into three major parts. One is electromagnetism, then optics. Optics में ray optics and wave optics we will do in the later part, and then there is modern physics. 50% of the course you can say is composed of electromagnetism, and out of that 50%, 50% we have covered in 2 months. That is electrostatics, capacitance, Gauss law, and current electricity. Now magnetism is related to charge in motion. So if a charge is there and it is moving with some speed, and it, let's say it also has an acceleration, it is changing its direction, then it will have associated magnetic effects. तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना. बट सरप्राइजिंगली like 200-250 years back, magnetism was considered to be a separate branch of study than electrostatics. Very recently we could find that there is a relationship between, when I say very recently, I mean like 100 years back or something like that, we got to know that magnetism is also the fundamental cause of the motion of charge. The charge is the fundamental basis on which electromagnetism is there. Now the electrostatics and magnetic effects, they are all now unified into one particular study, that is electromagnetism. Okay, so this is what the basis, the starting introduction of magnetism is. अब लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ के बता दूं, then I'll explain. ठीक है. So if two bodies have mass, they can have gravitational force. Okay. Second, if the bodies also have charge on them, then they can have electrostatic interaction between them. But in some situations, the bodies are not charged. Both the bodies are not charged. They have mass. In addition to the gravitational force, they might experience magnetic force also. Okay, there is no electric interaction, but they can exert force on each other by a concept known as magnetic field, which will be by virtue of their some magnetic property, magnetic property of that material, and they might attract or repel each other depending on what type of polarity does it have. Is it clear? So ये जो property होती है, which is not electrical, not gravitational, is known as magnetism. Okay. और ये जो bodies हैं वो है magnets. आपने I think magnets देखे होंगे, फ्रिज पे magnets लगाते हैं, कुछ लोग बुकमार्क्स के लिए यूज करते हैं मैग्नेट्स को. मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं, आपने देखा होगा. आपका जो स्पीकर होता है, आई डू नॉट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, बट स्पीकर के अंदर भी, लाउड स्पीकर के पीछे बैक साइड में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. जनरली ब्लैक कलर का होता है ये.
ठीक है ना. But you can magnetize steel, you can magnetize iron also. So in that case, color will not be black. So in general, the magnet that you have seen practically is mostly black. Okay. तो ये जो फिनोमिना है ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रिपल्शन एट अ डिस्टेंस, इज व्हाट वी कॉल इट एज मैग्नेटिज्म. ओके. अब सबसे पहले कब ऑब्जर्व किया था? दिस मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाज ऑब्जर्व लॉन्ग लॉन्ग बैक, लाइक 2500 years ago, in a place called Magnesia. Okay, now it is called Manisa now, and it is in Turkey. Okay, so there used to be a cow herd or some goat herd, I do not know. वो जब अपने गाय या भैंस या उनको चराने जाता था, तो उसके जो एक लकड़ी होती है ना, which they generally use to control the herd, उसके फ्रंट में दे यूज टू हैव सम मेटल पीस. ठीक है, तो आयरन का मेटल पीस था. एंड इन सम सर्टेन लोकेशंस ही ऑब्जर्व दैट कुछ रॉक्स ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती हैं उसको, एंड ही हैज टू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स टू रिमूव इट. तो वहाँ से आइडिया लगा कि देयर आर सर्टेन टिपिकल रॉक्स फाउंड देयर व्हिच हैव दिस प्रॉपर्टी. फिर और फर्दर स्टडी की, देन दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इट. फिर उनको लेटर ऑन दे केम टू नो दैट दे आर बेसिकली मैग्नेट्स, दे हैव गॉट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. When I say direction property, it means that if I suspend a magnet, okay, from a point such that it is free to rotate in the vertical plane, in the horizontal plane, then what will happen is that that particular length or the piece of iron or that piece of magnet, you can say, will orient itself in north-south direction of Earth. Geographical, we used to assume that it was geographical north and south, but वो geographical north and south नहीं होता है, वो geomagnetic नॉर्थ एंड साउथ होता है. उसमें क्या डिफरेंस है, विल लेट यू नो. जियोग्राफिकल एंड जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ में क्या डिफरेंस है, आई टेल यू. बट दैट मैग्नेट, दैट पीस ऑफ, उसको लोड स्टोन कहते थे वो लोग, LODESTONE, लोड स्टोन, बिकॉज इट यूज टू टेल यू द डायरेक्शन. तो शिप्स में भी यूज होता है नेविगेशन पर्पज के लिए. तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने आप को अलाइन कर लेता है. इफ इट इज फ्री टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, then it will orient itself in a direction such that one end will point towards the north, another end will point towards the south. This is known as the directional property of the magnet. ठीक है ना. तुमने आयरन नीडल देखी होगी कंपास की, मैग्नेटिक कंपास होता है ना, उसमें भी यू मस्ट हैव सीन एक छोटी सी नीडल होती है, वो एक्चुअली मैग्नेटाइज्ड आयरन होता है, एंड इट ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ पोल. ठीक है ना. तो ये जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन है मूविंग चार्जेस के बीच में, उसको मैग्नेटिक पोल्स के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं. तो मैग्नेटिक पोल्स दो टाइप्स के होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. मैग्नेटिक मोनोपोल्स विल नेवर एग्जिस्ट. यू विल नेवर फाइंड एनी मटेरियल ओनली हैविंग नॉर्थ पोल or only having south pole. If there is magnetism, it will be always in the form of dipole. North pole, south pole will exist together. ठीक है, ये आपको याद रखना. Then there are certain properties that like poles repel each other, unlike poles attract each other. ठीक है, this is like quite easy. ये अपना 8 9 में पढ़ा ही होगा पहले से. Is that clear? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज है तो वो चार्ज अपने सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, इट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग फोर्स. सिमिलरली, if there is magnetic material, it will have its magnetic field, and if that magnetic field is due to the current carrying wire, or it is due to the what, moving charge, then other charges which are in motion might experience some force due to the magnetic field of the first wire. Is that clear? So that is what is being stated. So every moving charge or any current carrying wire will have its magnetic field,
and that magnetic field can influence other moving charges or other current carrying wires. Is that clear? So in that way, it is similar to electrostatics. Is that clear? इतना सबको समझ में आ गया? Just read through it. इस पूरे को पढ़ लीजिए फटाफट. लिखना नहीं है, just go through it. Any doubt, let me know. Is it clear? For this bar magnet, magnetic field lines, they are moving from north pole to south pole outside the bar magnet. But inside the bar magnet, they will be moving from south to north. So magnetic field lines, they don't originate or terminate. They always form closed loop. This is very distinct feature of magnetic field. Unlike electrostatic field. Electrostatic field lines, they originate from positive charge, they terminate on negative charge. But here magnetic field lines, they will always form closed loop. Now if you wish to draw the magnetic field lines, what you have to draw is you have to place your magnet, this compass at different locations, and the direction in which magnetic needle is pointing will give you the direction of the magnetic field at that place, because magnetic needle will try to align itself in the direction of the magnetic field. Okay, so with the help of this you can draw the magnetic field line. So this is something that has been observed. Okay, the another way of finding uh, the magnetic field, the distribution of magnetic field is to make use of iron fillings. ठीक है, आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं? These are tiny bits of cylindrical, or you can chips of iron. ठीक है, बहुत पतली पतली cylindrical chips हैं ये of iron, right? So if you place them in that region where that bar magnet is kept, those iron fillings or iron chips, they will get magnetized, and because they get magnetized, they try to align themselves as shown. तो ये देखने में तो हमको ऐसा ही लगता है कि आयरन के फाइन डस्ट है, आयरन को आपने बहुत फाइन डस्ट में कन्वर्ट कर दिया, बट द पॉइंट इज इट इज वेरी थिन, बट इट्स लेंथ इज नॉट इनसिग्निफिकेंट. ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी की सारी एक सिलेंड्रिकल सॉर्ट ऑफ रॉड्स हैं, बट दे आर वेरी थिन. ठीक है, so they are finely grounded chips of iron. Okay, but not in the form of powder. Remember, I am using the word fillings. तो इन फिलिंग्स को अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो ये कुछ इस टाइप का शेप बनाती है. ठीक है ना? तो जहाँ पे आयरन फिलिंग्स ज़्यादा क्राउडेड हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, and the direction of fillings will give you idea about the direction of the magnetic fields, because those iron fillings, they got magnetized under the influence of the magnetic field of this bar magnet. ठीक है, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में वो अपने आप को अलाइन करते हैं. ठीक है, अगर हम दो बार मैग्नेट यूज करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ ऐसे रखते हैं तो ये शेप आता है. अगर हम नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल रखते हैं तो फिर ये शेप आता है. इज दैट क्लियर? So this is indicating that there is something known as magnetism as well. Now, Oersted was the first scientist who proved the presence of magnetic field due to a current carrying wire. Okay, and mathematically, quantitatively, it was proved by the Biot-Savart law. ठीक है ना? तो ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट क्या था? ये एक्सपेरिमेंटल सेट. ठीक है ना? तो जस्ट रीड थ्रू इट, देन आई विल गिव यू वन स्मॉल एनिमेशन.
मुझे कंफर्म करना आपको साउंड आ रहा है कि नहीं. In 1820, Hans Christian Ørsted performed a simple experiment and discovered सर आ रहा the है. magnetic effect of electric current. The experimental setup, similar to the Ørsted's experiment, which led to the discovery of magnetic effect of electric current, is shown in the animation. A conductor or conducting wire AB lying in north-south direction is connected to a battery V through a commutator or tapping key K and rheostat RH. A magnetic compass needle, NS, is placed just below the conductor AB. Initially, when no current passes through the wire AB, the magnetic compass needle shows no deflection. When an electric current passes through the wire placed above the compass needle, the magnetic compass needle got deflected from its normal position, which is along north-south direction. On reversing the direction of electric current through the wire, he observed that the magnetic compass needle got deflected in the opposite direction. Also, the deflection of the compass needle increased when the magnitude of electric current through the wire was increased or when the compass needle was brought closer to the wire. ये समझ में आ रहा है क्या किया. एक ऐसा अरेंजमेंट किया था जिसमें एक बैटरी है, एक की है, रियोस्टेट है. तो moving the slider on the rheostat will change the resistance, which will change the current. Okay, and on reversing the direction of battery as seen here, it will reverse the direction of current. So there are two ways you can perform the experiment. Basically three ways. What you can do is you can place this compass needle below the wire or above the wire. This is one difference. Another difference is that by sliding the rheostat, sliding the slider on the rheostat, you can change the resistance, increase or decrease the current. So if current changes, then the deflection also changes. Okay. And third is if you reverse the direction of battery, as you can see here, इसमें reversal of direction of current भी होगा. Because of that, there is a reversal in the deflection of the magnetic needle. So based on all these observations, Oyster, ठीक है, देखो मैं I just read out. It was observed by Oyster that a current carrying wire produces magnetic field near it. It can be tested by placing a magnet in the nearby space. It will show more movement, some movement, deflection or rotation or displacement. This observation shows that current or moving charge produces magnetic field. Okay? When no current is passed through the wire, the magnetic needle remains undeflected. When current is passed through the wire AB, the magnetic needle gets deflected in a particular direction and the deflection increases as the current increases. Okay. Third, when the current flowing in the wire is reversed, the needle gets deflected in the opposite direction and its deflection increases as the current increases. तो ये तीनों केसेस हमने समझ लिए हैं. आ रही बात समझ में? अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. ठीक है. जैसे करंट फ्लो करेगा डिफ्लेक्शन आएगा. करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा. करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा. तो ये सारे पैरामीटर्स, the idea, we get an idea that there is something known as magnetic field due to current carried wire. Okay. So based on the three observations, he concluded that on passing a current through a conducting wire, a magnetic field is produced around this wire. As a result, the magnetic needle is deflected. Okay. This phenomenon is called magnetic effect of current. Okay.
फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया था बाद में, दैट इज बाइट सेवर लॉ. बेस्ड ऑन दैट वी केम टू नो दैट फॉर एनी करंट कैरिंग वायर the magnetic field in that region is forming concentric circles. ऐसे. So let's say this wire PQ has current in it, right? And because of that current, there will be setup of magnetic field in a plane which is perpendicular to the wire. So ABCD is a plane which is perpendicular to the wire PQ. So when current is flowing from P to Q, it forms magnetic field lines. Those magnetic field lines, they are closed loops, concentric closed loops. And the axis of every circle is this wire PQ. Is that clear? Now these experiments gave you some idea about what magnetic field lines are. Okay. Then once again, let me again tell you that the concept of magnetic field lines was introduced to visualize the effect of magnetic field. So magnetic field lines are something which is an imaginary concept. We are just using it as a geometrical tool to visualize the effect of magnetic field. ठीक है ना? So it is same as what you have learned in electric field. Just go through it. The only difference is it forms continuous closed curve, right? Okay, just read out. ये पढ़ लिया ना? This is very important. Magnetic monopoles do not exist. Exist नहीं है, exist है. ठीक है? Magnetic monopoles do not exist. सर हाँ बोलो. सर ये बी पॉइंट एक बार समझा. If in any region
In a combined field due to two magnets, there are no lines of force. That is, the resultant force is zero at that region. Such regions are called null point or neutral point. देखो, तुमको ये रीजन दिख रहा है यहाँ पे? ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ठीक है? तो नॉर्थ पोल की यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इस नॉर्थ पोल की इधर होगी। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे अगर कोई भी नीडल को रखोगे तो उसका किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, रिजल्टेंट ऑफ द टू मैग्नेटिज्म से। आई बात समझ में? Yes. थर्ड पैराग्राफ हर्ष ने पूछा है, विच थर्ड पैराग्राफ बेटा? Sir, वो the path along with the compass needles are aligned is known as magnetic lines of force over. देखो, ये तुमने लिया एक बार मैग्नेट, ठीक है ना? अब तुमने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे तुमने अपना कंपास नीडल रखा, एकदम पास पास में रखा, ठीक है ना? आई एम शोइंग ओनली फ्यू 10-15 आई एम शोइंग, बट लेट्स से इनफाइनाइट सच डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव केप्ट, ठीक है ना? तो हर जगह पे तुमको एक डायरेक्शन मिलेगा नीडल के पॉइंट करने का। आ रही बात समझ में? तो नीडल जिस जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है उन सारे डायरेक्शंस को अगर तुम ऐसे कंटिन्यूस कर्व में प्लॉट कर दोगे, इट बिकम्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अंडरस्टूड? अब देखो पैराग्राफ सर फिर से वो पढ़ो। टेंजेंशियली वाला कुछ लिखा था ना, वो क्या? तो टेंजेंट ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर मैं तुमसे ओके पूछूं ओके। कि यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे तुमने मैग्नेटिक नीडल रखा होता तो वो इस डायरेक्शन में पॉइंट है। हाँ यस, पता चल गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो यही था ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे, देयर इज नो डिफरेंस, हाँ दे आर एग्जैक्टली द सेम। ओनली वन डिफरेंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज that they form closed loops. This is very important. Electrostatic field lines, they do not form closed loops. They originate and terminate. But magnetic field lines, they always form closed loops. Any other doubt? सर, एक मिनट, वो बाकी है थोड़ा।